Okay, so here we have drawn a linear sloping demand curve. ठीक है, it's a downward sloping linear demand curve. By linear I mean it's a straight line. If I constantly decrease the price, what is going to be happening? Quantity demanded is rising. What do you mean by quantity demanded rising? Quantity demanded rising means that more quantity will be produced the lower you reduce the price of the product, right? Understood? This is happening. This means that more units are being demanded. But does this really also mean that total revenue will rise as well? The fact that quantity demanded has to rise because of a fall in price on a demand curve, does that means that this will also happen? Are they both equal? Does that mean that if by equal I mean that does that mean that this is going to happen? If price falls, quantity demand rises, total revenue will rise? Not always. It might and it might not happen. And this is shown in the below demand curve. जो हमने अभी this is shown in the below demand curve as well as the corresponding total revenue graph. हमने total revenue graph भी नीचे बनाया. पहली बात तो ये है कि ऐसा मोबाइल रख दें प्लीज, शाबाश अपने सारे. ऐसा क्यों होता है कि जब आप प्राइस गिराते हैं क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती भी है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ने के बावजूद भी आराफ टोटल रेवेन्यू हमारा हर वक्त नहीं बढ़ रहा होता, बिकॉज रेवेन्यू इज प्राइस टाइम्स क्वांटिटी, राइट? तो अगर आप प्राइस गिरा रहे होते हैं तो हमने माना कि क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही होती है, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन द इलास्टिसिटी. क्वांटिटी डिमांडेड विल राइज टू व्हाट एक्सटेंट डिपेंड्स अपॉन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. If the demand is inelastic, quantity demanded will rise, but relatively less. Do you understand that? And if the demand is elastic, if you reduce the price, quantity will rise, but relatively less. Hence, total revenue will fall. Right? तो हमने ये बात पढ़ी थी कि अगर demand आपकी elastic होती है, and if you are reducing the price, the total revenue goes down because you're इधर board पे ध्यान देना है. Because the quantity demanded will be rising relatively less. Similarly, if the demand is elastic, what will be happening, Jasya? If you reduce the price, total revenue will increase. Why? Because although you make your product cheaper, कहने की outfitters पे भी सेल लगी हुई थी. मुझसे किसी ने पूछा कि यार सेल लगी हुई है तो outfitters वालों का तो रेवेन्यू कम हो गया होगा, उन्होंने तो 30% डिस्काउंट दे दिया. मैंने बोला रेवेन्यू कम हुआ होगा पर यूनिट रेवेन्यू कम हुआ होगा. आपने एक टी शर्ट 1500 रुपए की जगह 1000 की बेच रहे हो तो पर टी शर्ट रेवेन्यू कम हो रहा है, टोटल रेवेन्यू कम नहीं हो रहा. क्यों? क्योंकि टोटल रेवेन्यू में तो क्वांटिटी का इंपैक्ट भी शामिल है. क्वांटिटी डिमांडेड इस एक्सटेंट से इंक्रीज हो जाएगी भाई, वो ऑफसेट कर देगी प्राइस के डिक्रीज को. हेंस टोटल रेवेन्यू विल राइज. इस तरह लिखना होता है एग्जाम में. अगर डिमांड यूनिटरी इलास्टिक है सर, सो इफ यू रिड्यूस द प्राइस टोटल रेवेन्यू विल स्टे द same, it won't really be impacted. And we are showing this on this demand curve. Look at this. When PD equals to 1, that is it is unitary elastic, we see that total revenue is not changing. हमारा जो area है that where PED is unitary elastic, the area where PED is unitary elastic, total revenue is constant, it will not change, it will stay the same. The area where on the demand curve where PED is unitary elastic, total revenue will be constant, it will stay the same. However, copy नहीं करना है अभी. However, बोर्ड पे देखें. However, if the area where demand is elastic, that is this area the demand is this area the demand is price elastic, right? If you reduce the price within that area, what is happening? We see that there is a corresponding increase in total revenue. But if you reduce the price in an area where demand is price inelastic, there is a corresponding decrease in total revenue. ये डायग्राम तो बना के आ गए ना एग्जाम में. इधर देखें, अब हमें स्ट्रक्चर देखना है, हम किस तरह आंसर करेंगे. तो ये वाली जो चीजें हमने देखी थी ना पहले, इम्पैक्ट ऑफ टोटल रेवेन्यू, ये सब हमने एनालिसिस थी. अगर आप शुरू में एग्जामिनर को ये डायग्राम बना के दिखा देना, शुरू में आप उसको पहले लॉजिक दें, आप उसको ये लॉजिक दें कि अगर डिमांड इनइलास्टिक होती है ये रूल स्टैब्लिश कर दें, ये होगा, ठीक है, और ये डायग्राम बना दें. दिस द रिलेशन बिटवीन different elasticities on the same linear demand curve and the corresponding changes in total revenue can be shown in the below two diagrams, that is diagram A and diagram B. अब आपने जब ये डायग्राम बना दिया ना तो एग्जामिनर को ये अंदाजा हो जाएगा कि अब जो भी नेक्स्ट बच्चे ने लिखा होगा वो क्या लिखा होगा. उसको शुरू में अंदाजा हो जाएगा, अच्छा ठीक है, बच्चे को समझ, बच्चा पढ़ के आया, बच्चे को पता है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है.
तो एग्जामिनर को आपने कोशिश करनी है कि शुरू में ही इंडिकेट कर दे कि वो आंसर की पहली 3-4 लाइन पढ़ के अंदाजा लगा ले कि अब मेरे पास आगे क्या आने वाला है। शुरू की 3-4 लाइनों में आप जब गलती करते हैं ना या कोई ब्लंडर कर देते हैं तो एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन को आप जीरो पे ले जाते हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये डायग्राम समझ में आ गया। इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन मैंने कल जो ग्रुप पे नोट्स भेजे हैं वहां पे भी मौजूद है। क्लियर? समझ में आ गई बात? नहीं समझ आया? आ गई? So if the demand is elastic, a reduction in price will reduce total revenue. So total revenue जो होता है ना, अच्छा by the way, the line for total revenue should always start from the origin. Why? It should start from the origin. इधर देखें, it should start from the origin because सुन लें, उसकी वजह क्या है? जब आपकी प्राइस मैक्सिमम है, when you are charging the maximum possible price, no one is buying your product. The quantity demanded is zero. And when the quantity demanded is zero, the total revenue should also be zero. When nothing is sold, the total revenue is zero, right? At a price of zero, this is the amount of quantity that is demanded. So for example, consumers might say, we are only going to buy 50 shirts from outfitters only if they are selling them for free. वरना हम 50 तो नहीं लेंगे. So if the consumers are willing to buy 50 t-shirts but they are willing to pay zero for them, so 0 into 50 would be zero, right? The total revenue again would be zero. These points are explained in the notes that I sent yesterday as well. Is this clear? Any questions? No questions? Moving ahead, we are starting with a new topic, that is price elastic. The more diagrams you give,